So yes, it's 4 a.m. in the morning. I'm recording this vlog. Also, I look bloated because I just had 2 hours of sleep. Anyways, I'm excited because we are going to Berhampur. It's a friend trip and I just wanted to vlog. And also I'm recording outside because my friends are still sleeping. So yes, I just wanted to vlog and take you all along with me in this journey, on this trip. So I'll see you guys in a while. Now we are leaving hostel. We are going outside. Just a little scenario of our hostel. My outfit for today. So this is the scene presently, and here are my friends. What's the time now? 5. Yeah, it's 5 a.m. and so we started from our hostel. Everyone looks hyped up for today's trip. Let's see how the days unfold. Also, let me give you all a little tour of my campus. So this is how it looks early in the morning. So we are going outside and there the vehicle might be waiting for us. So yeah, our campus is quite inside. I mean our hostel is quite inside the campus. So we need to walk on for about maybe 5 minutes to reach outside. So yes, also we have a court here. My campus is beautiful to speak of. Now we are outside the campus after 5 minutes walk. My rest of the friends too have joined us. Say hello. Hi. Arpita, hello. So now we have started from here. We are moving. Like our vehicle just started. We are already sitting. Now we have come to the room to just quickly freshen up and then we are going to have a breakfast. See you there. So let me introduce you to the manager of today's trip. We have here. Okay. So he's Rahul. So आज हम कहाँ जा रहे हैं बोलो? हम यहाँ से टिफिन करेंगे, उसके बाद जीरंग जाएंगे, उसके बाद खसड़ा एक वाटरफॉल है वहाँ पे जाएंगे. तो टाइम हुआ तो तब तक पहुँच जाएंगे. जीरंग क्या है? जीरंग इज द बुद्धिस्ट टेम्पल. Oh. So we are going to the Buddhist temple. Yes. उसके बाद हम जाएंगे waterfall. हाँ. उसके बाद तब तो बढ़ेंगे एक hot water spring है. Hot water spring. उसके बाद beach. God, beach also. So we are going to many places, guys. So stay tuned. So now finally we are going for breakfast. I'm so hungry literally. Are you guys hungry? तुम लोगों को भूख लग रहा है? बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है ना? हाँ. बहुत ज़्यादा. सुबह like 4 बजे से हम निकले हैं और कुछ खाए नहीं. We just munched on some biscuits and now we are going. गाइस हम जिरंग जा रहे हैं और वो हम जहाँ पे थे उससे 102 किलोमीटर दूर है. सो के उठ के सब कर रहे, पहुँच नहीं रहे. स्टिल 90 किलोमीटर लेफ्ट. फाइनली आफ्टर अराउंड 6 आवर्स 6 घंटा ट्रैवल करके बीच में ब्रेकफास्ट के लिए ऑब्वियसली रुके थे. तो वी रीच्ड दिस डेस्टिनेशन.
So here we have a gumpa. It's here. So the second place we came is this Khasta waterfall. You can see this waterfall behind. पीछे waterfall दिख रहा है वहाँ पे, तो हम अभी जा रहे हैं. So see here, my friend. यहाँ पे इतना beautiful जगह है ना घूमने का. And look what we see here. So हम ये वाटरफॉल पूरा घूम चुके हैं अभी, और हम दूसरी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत मजा आ रहा है. यस हम दूसरी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे हम प्रीवियसली नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे 2 बजे के बाद आने के लिए बोला है, वो बंद था तभी. तो हम अभी वहीं जा रहे हैं. सो आप लोग को भी ले चलते हैं साथ में. So ये गुम्पा we have entered and the ambience is so peaceful like the previous place we went. पहले जैसा ही है, अभी बहुत शांति है. So अभी we just visited the Gumpa and like we are going out of Gumpa. I feel nostalgia because Gumpa usually मैं सिक्किम में visit करती थी and उड़ीसा में this is the first Gumpa I'm visiting and the energy is same, सब कुछ same, the environment. This completes our Ziran Monastery visit. Ziran का बहुत small monastery और big monastery हम visit कर चुके हैं. Now we are so hungry. We are going to have our lunch. Right beside that, इधर food court है जहाँ पे नेपाली डिश मिलते हैं. Like the menu here, as you can see, thuppa, laughing, momo, everything we get it. We are going to the food court to have our lunch.
are here to have lunch. We are here in Tibetan hotel, so we'll be having thupas and chow mein momo. I'm so thrilled to have thupa here after like even 6-7 months I'm having here, so I'm very excited for thupa is here. But यहाँ का थुप्पा का टेस्ट ऑथेंटिक थुप्पा जैसा नहीं है जैसा होता है. They put something here जिसकी वजह से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है. Don't know what. So हम अभी लंच करके निकल चुके हैं. I had थुप्पा, मोमो, फ्राइड राइस, चाउमीन. बट सबसे अच्छा मोमो था यहाँ पे, ऑथेंटिक लाइक नेपाली मोमो जैसा था. एंड आई ऑल्सो बॉट दिस सब्जी एंड आई एम हैविंग इट. By the time हम बीच पहुँच गए थोड़ा देर हो गया, but it's not quite right. It's 7. So हम सिर्फ quickly थोड़ा देख के आ जाएंगे. We'll not go inside the water. That we have decided at least. ये बीच का नाम क्या है देवशीष? हाँ, गोपालपुर बीच. गोपालपुर बीच. लास्टली हम दिन का एंड ये मकई खा के कर रहे हैं. सो टुडे वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे. तो आज का दिन हमारा ख़त्म हुआ ये मकई के साथ. सो आई थिंक हमारा व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आई विल मेक इट इन 2 पार्ट्स. आज फर्स्ट डे के लिए डे 1 एंड टुमारो आई विल बी मेकिंग अनदर व्लॉग एंड देन डे 2 बोल के मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी. ओके. हम बहुत मजे किए, मस्ती किए और बहुत मजा आया हमें. हाँ, बहुत एंजॉयमेंट किए, बहुत अच्छा लगा, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगा. यस, हमारा फर्स्ट टूर था एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. वी विल मेक सम मोर प्लान्स राइट. ओके. मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया. द बैड थिंग इज दैट. सो हम अभी रूम जा रहे हैं एंड मे बी आई विल सी यू गाइस इन द रूम. टिल देन बाय.